Hello dear students, once again welcome back to you all, myself Amujad. So today we are going to continue our last section of class 9th biology tissue chapter. It is actually part 5. Before that we uploaded part 1, part 2, part 3 and part 4. But here we will continue through the animal tissue guys. But before that let me tell you one major thing is that चलो भाई बहुत सारे का comment आ रहा है कि we are not getting your clear photo of your face or pic of your face. But it doesn't matter to look my face because there is nothing on my face. So you have to only focus on the board. तो चलो guys यहाँ से स्टार्ट अप करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे guys about animal tissue. Means that कि animal tissue के बारे में कुछ certain features जानेंगे जो कि हमें plant tissue में देखने को नहीं मिलता है. तो totally study करेंगे guys. But before that चलो हम लोग यह तो जान गए guys कि all animals are made from cells and the cells further join together to form tissue. The same chain is followed by tissue. It forms organ, then organ system, and then finally an organism. But the guys, the main thing matters over here is that through this chain, what we want to show you all, actually through this chain, we are showing you all that there is a division of liver, that every cell, every tissue, every organ, so in it, means that because of division of liver only we are working properly. Means that every organs of our body are having their own work. They cannot do the other work of their another organ. So that division of liver is very essential in living organism. So continue. Let's start our section about animal tissue. Animal and the thing tissue. Actually, animal tissue. What is the use of tissue in animal? I already told you because there are so many exceptional cases of animals which are unicellular like amoeba, paramecium. So many examples are there that leave it. Actually, there are so many prokaryotic and so many unicellular organisms also. In unicellular organism, you might be wondering, hey, how can be tissue available over there? No, actually, there only one cell is there in unicellular organism. But in case of multicellular organism, only one cell or the cells cannot provide or cannot meet the requirements required in the body of any animal. So there the efficiency of or there the necessity of division of liver becomes very useful. That's why division of liver is shown by every cell guys. So we are going to start animal tissue. Actually, why is tissue required in animal? I already asked you this question. Actually, animal tissues not only help in moving their parts of the body of animals, but certain things are also done by tissue. So we will start from that. Based on the criteria of the work done by tissues, they are classified into 4. Animal tissues are classified into 4 based on the work done by different types of tissues. First one is epithelial. Epithelium. Second one, muscular. Then connective. I will finish the full tissue of animal tissue in this video only. Don't worry about the length of video. We will learn overall. Nervous tissue. Nervous tissue. Here we will see that why epithelial tissue is different from muscular tissue or how, and which are the works performed by these two tissues, then connective tissue and nervous tissue. Actually, epithelial tissues are nothing but by the name only we can see here epi. In plants also we saw this term epidermis. Epidermis. There I told you epi. Epi means outer. So here we can see epithelium might be related to the outward something position or maybe something. I'm giving you overview. So there is the same criteria that we use here also about the EP that we will see later. But what about muscular? We already knew that muscles, the main function involved by muscles are that they help in the movement, contraction and relaxation through which movement is generated. The next one is connective. Connective we already knew. Suppose I'm taking here one rope. Here we are putting a joint, then we are connecting another rope. So we can say that these ropes are being connected through this joint. So this is the work involved by connective tissue also. But the next one, nervous tissue. As we already knew that a lot of nerves are available in our body, and even nerves are so many types that we already knew.
but the main thing is that the work involved by nerves. I already told you that the main controlling unit of human body is our brain. So how the messages actually goes to our brain? The main function involved by nerves are their ability to transfer the messages from the position from where the message is generated to the brain, and even the brain also send message that you will study in class 10 about the a specific name, but the main thing you have to learn here over that is they mainly involve the function of transporting one message from one place to another. So we are going to start first epithelial tissue or epithelium tissue. Epithelium tissues are having their certain on basic criteria that we will see, and their specific types also. So let's start our epithelial tissue, guys. Epithelium or epithelial, it doesn't matter. The main content you have to learn is that what is epithelial or epithelium tissue. Let's start. As I already told you, in plants, their epidermis is formed. The main work involved by epidermis is the protection of the inner organs of the plant. But here also the epithelium performs the same function. So guys, we can say, wait guys, wait. Yeah. Epithelial. But before that guys, I told you in part 1 only, हमें जो भी पढ़ना है guys, इतना याद रखो, anything that we have to study in biology especially, we have to go through only 3 things. देखो पहला में हम लोग को क्या जानना है, ये याद रखना. कोई तुमसे कुछ नहीं पूछेगा, बस 3 चीज पूछता है. पहला हमें नेचर, सेकेंड होता है ऑक्यूरेंस, एंड थर्ड होता है फंक्शन. ये हमेशा याद रखना कि जब भी हमें पैराग्राफ के अनुसार या whenever we are told to explain something overall, or we can say write a short note on epithelium, that what we have to do over that time, we have to go only through these 3 terms. पहला में क्या करना है कि उसके नेचर के बारे में बताना है, यानी उसका अपना जो क्या एबिलिटी है या उसका अपना कुछ क्या कैरेक्टरिस्टिक है. सेकेंड हम लोग बोल सकते हैं ऑक्यूरेंस, मीन्स दैट कि वो कहाँ फाउंड किए जाते हैं. तो बेसिकली ये तो एनिमल्स है, तो एनिमल तो हमेशा कहाँ बोलेंगे, हम लोग तो सिंपली बोले एनिमल के और उनके बॉडी में पाए जाते हैं. देखो ये आंसर नहीं होता है, उनका स्पेसिफिक पोजीशन होता है. सो दैट वी हैव टू स्टडी इन ऑक्यूरेंस. एंड द लास्ट थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फंक्शन. मीन दैट फंक्शन भी हमें बताना होता है. तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं नेचर से. नेचर देखो मैंने पहले बताया कि दे आर प्रोटेक्टिव टिश्यू, और वी कैन से दैट दे वर्क एज प्रोटेक्शन. देखो अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि दिस इज फंक्शन और नेचर. एक्चुअली नेचर का मतलब मैंने पहले बताया कि उसका कैरेक्टरिस्टिक. फंक्शन का तो मतलब ये होता है कि वो क्या कर रहा है, किस लिए अवेलेबल है हमारे बॉडी में. तो नेचर इसके बारे में देखो मैं पहले बताऊंगा. नेचर में इसका मेन चीज क्या होता है ना, कि इनका जो लोकेशन होता है वह एक बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसमेंट के ऊपर होता है. चलो ये हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि अबाउट द नेचर. एक्चुअली एपिथेलियम टिश्यूज आर मोस्टली अवेलेबल in that cellular form without leaving so space between them. चलो इसके बारे में एक बताऊंगा. Suppose guys this is what the structure of epithelium. ये हमारा एक सिंपल डायग्राम मैंने बता दिया आपको. अब देखो इसके माध्यम से मैं आपको बताना क्या क्या चाहता हूँ, जो सबसे पहले हम लोग जानना. द फर्स्ट थिंग इज दैट देखो वो हमेशा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के सपोर्ट से ये रहते हैं. इससे हम लोग क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन. वी आर डिस्कसिंग अबाउट एपिथेलियम. चलो बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया. अब सेकेंड थिंग इसका जो नेचर है उसके बारे में हम लोग को क्या जानना है कि दे हैव नो स्पेस बिटवीन 2 सेल्स. देखो यहाँ पे आपको स्पेस तो नहीं दिख रहा है कि बहुत सारे सेल्स हैं. अब देखो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को एक डाउट आता है गाइस, ये मैंने अभी तक नहीं डिस्कस किया, कि क्या वो हमेशा आउटर पार्ट में ही पाए जाते हैं, इनर ऑर्गन में नहीं होता है? होते हैं गाइस. देखो एपिथेलियल का मतलब ही होता है प्रोटेक्शन. अब प्रोटेक्शन 2 तरह से दिया जाता है.
एक तो मान लो कि हमारा स्किन होता है, इसमें भी एपिथेलियल में पाया जाता है। यह स्किन का जो आउटर लेयर होता है ना, ये एपिडर्मिस में जैसा होता है, ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू का ही बना हुआ रहता है, ठीक है। और एक चीज होता है, जैसे देखो हमारा जो भी इंटरनल ऑर्गन, जैसे लंग्स के बारे में आपने सुना है, हार्ट के बारे में सुना है, बहुत सारे ये सब ऑर्गन हम लोग जानते हैं। जो हमारा लंग्स होता है उसके ऊपर जो लाइनिंग के स्ट्रक्चर का एक टिश्यू अवेलेबल रहता है, वो हमारा एक्चुअली होता है एपिथेलियल टिश्यू। तो बस इतना याद रखना कि एपिथेलियल कहाँ अवेलेबल होता है या कैसे रहता है। तो हमें बोलना है कि ये आउटर और इनर ऑक्यूरेंस, हम या कह सकते हैं लाइनिंग स्ट्रक्चर में अवेलेबल रहता है। नेचर इसका क्या होता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होता है और हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इतना याद रखो कि हर सेल में एक छोटा वाला न्यूक्लियस रहेगा। गाइस, द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट देयर साइटोप्लाज्म। देखो इनके पास जो साइटोप्लाज्म होता है, you might be getting confusion, so let me make the nucleus round with black marker. Okay, now okay, yeah, we can see their nucleus. What about their cytoplasm? देखो एक चीज बहुत याद रखना कि हम लोगों ने यह डिस्कस किया था कि प्लांट का जो एपिडर्मिस होता है वो डेड होता है। देयर आई टोल्ड यू गाइस कि प्लांट का जो कॉर्क होता है, लेटर फॉर्मेशन, वो डेड सेल से होता है। तो आपका दिमाग में यह आ रहा होगा कि क्या एपिथेलियम का सेल्स होता है वो लिविंग होता है या डेड होता है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट देयर नेचर, मींस दैट दे आर लिविंग और नॉन लिविंग। एक्चुअली दे आर लिविंग। द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू स्टडी अबाउट देयर साइटोप्लाज्म, मींस दैट दे आर मैट्रिक्स। एक्चुअली उनका जो मैट्रिक्स होता है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि देखो मैट्रिक्स से हमें यह पता चल जाता है कि यह जो एपिथेलियल सेल्स है वे कैसे हैं। तो उनके मैट्रिक्स में एक स्पेशल टाइप का कंटेंट अवेलेबल रहता है गाइस, और वह हमारा कुछ और नहीं होता बल्कि इट इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज नोन एज कोलेजन। देखो ये सभी जो बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपको नोट आउट रखना, क्योंकि यही सब आपको लिखना है अबाउट द एपिथेलियल। लास्ट थिंग हम लोग को जानना है गाइस अबाउट देयर ऑक्यूरेंस। ऑक्यूरेंस कहाँ कहाँ होता है? देखो एक्चुअली ये जो होता है ये सभी जगह होता है जो कि हमारा आउटवर्ड एरिया में है, कहो कि डायरेक्ट सराउंडिंग से अवेलेबल है। सब हम लोग बोल सकते हैं दे आर अवेलेबल ऑन दी आउटर लेयर एज द स्किन। सेकेंड हम लोग क्या लिख सकते हैं ऑक्यूरेंस, मींस दैट दे आर अवेलेबल ऑन लाइनिंग लाइक स्ट्रक्चर ऑन आवर बकल कैविटी, लंग्स, एल्वेओलियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा वी कैन राइट। बट द लास्ट थिंग अबाउट फंक्शन, एक्चुअली देखो गाइस ओवरऑल मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि फंक्शन इन्वॉल्व्ड बाय एपिथेलियल आर थ्री। फंक्शन हमारा प्रोटेक्शन, फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन, द नेक्स्ट वन इज अब्जॉर्प्शन, the last one is secretion. Actually these three all works are performed by epithelial tissues. How we can say protection? As I already told you, they are mostly protective in nature. First one over. What about absorption? Actually how they perform absorption? You might be getting about this clue. आपके माइंड में यह तो आ रहा होगा कि वो absorption perform कैसे करते हैं, या हम लोग कैसे बोलते हैं कि वो absorption को perform भी करते हैं। तो देखो इसके पीछे का रीजन मैं दो चीज बताऊंगा, वो अब्जॉर्प्शन कैसे करते हैं। देखो अब्जॉर्प्शन क्या करते हैं या कैसे करते हैं, दोनों मैं आपको बताऊंगा। पहला तो हम लोग जानते हैं कि व्हेनेवर वी आर रिमूविंग आउट यूरिया फ्रॉम आवर बॉडी, एट दैट टाइम वी न्यू दैट द वाटर कंटेंट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन द किडनी। मैं क्लास 10 के टॉपिक पे नहीं जा रहा हूं, बस इतना समझो कि जब यूरिया निकाला जाता है तो व्हेनेवर वी आर डिस्पैचिंग यूरिया फ्रॉम आवर बॉडी, एट दैट टाइम another one time more we observe, not we but our organs observe the water content and the important nutrients from that, and after that the left particle is being thrown out through our body. So there we can see absorption is performed by epithelial tissue. And last one, secretion. Actually secretion is also done by epithelium tissue. How? During time of mucus. Mucus is secreted from a special type, you leave it, I am going to tell you in their specific type. बस इतना आपको याद रखना है कि ये तीनों वर्क, these all three works are performed by epithelial tissue. Now we are going to see about the specific types. कितना टाइप होता है, वो कौन कौन होते हैं, ये सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस देखो हम लोग स्टार्ट करें। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देयर टाइप्स। एज आई टोल्ड यू दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स। फर्स्ट वन स्क्वैमस एपिथेलियम, सेकंड वन let me write the full name, squamous epithelium, second one cubital, then columnar, then ciliated. Here columnar is having another name as glandular.
The difference between glandular and columnar is nothing but their shape only matters. But here we will study about these four tissues of epithelium. So let's go through first squamous. Before that, guys, once again I'm telling you all, because I'm working this much for you all, so at least one like is required, because you all are getting so many things from our channel, and even I had also asked from you to join our Telegram channel. Till now, if you had not joined, go and join the Telegram channel. So let's continue our section of squamous epithelium. देखो guys, squamous जो है ये सबसे बेसिक, ये सभी में माना जाता है कि स्क्वैमस जो है ये मेन रोल करता है, इन्वॉल्व करता है एपिथेलियल का। मींस दैट कि ये प्रोटेक्शन का मेन रोल जो इन्वॉल्व किया जाता है वो स्क्वैमस के थ्रू होता है। देखो स्क्वैमस का जो मैंने डायग्राम दिया था वो एक्चुअली स्क्वैमस का ही था। वहां पे हम लोगों ने देखा था कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। मीन दैट नेचर इज ऑल डिस्कस्ड अबाउट स्क्वैमस एपिथेलियम। बट गाइस देखो, हम यहाँ पे आपको क्या बताएंगे इन चारों का, बस हमें क्या बताना है, occurrence and function I will tell, because the nature I told you in the beginning only, nature matters same, but their functions and occurrence somewhat matters different. So we will start from that. So guys, we are discussing now the function involved by squamous epithelium. So guys, before that, let me tell you about the occurrence. By the function only you will get where they might be available. So देखो occurrence क्या होता है। Actually occurrence means from there where they are found. Actually they are found as two things. First one I told you about as their lining, and second one I told you as the outer cover. So first one, lining. L stands for lining. They are found as the lining of body organs or body parts. We can say first one mouth, second one oesophagus, third one we can say alimentary canal, etc. What about covering? Tongue, skin, etc. Means that they are found as the lining in our mouth, oesophagus, alimentary canal, etc. Here they involve the same function which they involve over here. Means that they protect mainly the body organs from getting damaged. And the next thing is that they also help in filtration. अब देखो मैंने पहले बताया, most of us might be getting confused. As I told you, only major three works are involved by squamous epithelium, but how we are studying here filtration? You might be getting confused then, but very good question. Let me tell you about the filtration process done by squamous epithelium. देखो guys, हम लोगों ने पढ़ा कि plasma membrane are the outer covering membrane of any cell. Plasma membrane. And here we learned about the one thing is that they also work as a selectively permeable membrane. Means that they first filter, then only they send the particles inside. The same work here squamous epithelium also involved. As I told you, they are outer membrane. तो anything हमें पास आउट करना है तो वो आउटर से वहीं के जाएगा ना, ऐसा तो नहीं कि वो डायरेक्ट अंदर चला जाएगा, बाहर तो वो कांटेक्ट में नहीं है. No guys, so we can say that squamous epithelium also helping filtration. So this much guys clear है. अब we are going to see about the cuboidal epithelium. Actually cuboidal. Cube plus idal. Cuboidal. What about cuboidal? Actually cuboidal epithelium is totally based on their diagram. By its diagram only you will get what I am going to tell you all about. Wait guys. So guys, I am going to discuss about cuboidal. This is our basement. B stands for basement and M stands for membrane. This is our cuboidal cells, cuboidal tissue cells. अपना छोटा सा एक अंडा में stand for nucleus guys. Here we can see certain tiny dot-like structure. तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है. तो इंटरनल स्ट्रक्चर काफी मैटर करता है क्यूबॉइडल का. तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट देयर नेचर. तो नेचर पहले इतना जानो कि इनके पास जो नेचर होता है, सेल्स होते हैं, ये बेसमेंट में हमेशा लाई करेंगे गाइस. And the next thing is that about their cytoplasm. Their cytoplasm also contain one special type of protein. I told you already, collagen. So leave it. Now we are going to see about their occurrence because video is getting too much long. Occurrence means that where they are found. Actually, they are found as the two role involved by them. So we will discuss about that also. Actually, they are available on salivary glands.
they are available in pulmonary glands, even sweat glands, kidney tubule, etc. Because there are so many regions where we can see the cubital tissues or cubital cells. Actually, which are the function involved by cubital tissues? So function इतना याद है, बहुत ही आसान है गाइस, इतना याद रखना कि इनका जो फंक्शन होता है ये काफी एक्सेप्शनल केसेस है. यस गाइस, cubital is considered exceptional in the overall epithelium. Why? Let me tell you. First one, secretion. S stands for secretion. Second one, excretion. And third one, protection. Actually ये जो होता है ना, इससे हम लोग एक्सेप्शनल कहते ही कहते हैं. अब एक्सेप्शनल कहते किससे, इसलिए मैं बहुत ही अच्छी तरह से आपको बता रहा हूँ. फर्स्ट वन सेक्रेशन, सेकंड वन एक्सक्रेशन, थर्ड वन प्रोटेक्शन एंड फोर्थ वन ऑब्जर्प्शन. ये all four works are being done by a cubital epithelium guys. तो देखो secretion actually कैसे कहते हैं, means that they are found in salivary glands, so there they produce saliva. Excretion, as I told you, secretion and excretion somewhat it is similar, we can say similar, but in class 10 you will see the wider discrimination, so leave it. Then protection, actually they also help in mechanical protection also guys. The fourth thing is their absorption. The same content I told you, overall epithelium is also considered as absorption or filtration. So next thing we are going to see about columnar. Actually columnar are nothing but their name only suggests that column like cells might be available over there as their nature. So first one there about their shape means like this. Like that only they are all about. Here we can see the same nucleus, and the next thing is that the same basement membrane will be there over there. But what about another thing that we have to study about the columnar as an exceptional. देखो exceptional क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि exceptional आपको कुछ ज्यादा इसमें क्लास 10 में तो आपका कंटेंट है नहीं टिश्यू का, लेकिन guys don't worry about, because if related to tissue so many times you will learn in class 10. So guys, here we are learning about their nature. I told you about them as they are mostly located same only basement membrane. But major thing is that they contain microvilli. What is microvilli? Actually, whenever you might have seen when we are discussing about prokaryotic cells, there I told you villi like a structure means that finger like projection outward the cell is known as villi. The same content is found over here also. So you might be getting confused. Hey, why microvilli is available? कुछ तो गड़बड़ है. चलो गड़बड़ क्या है देखो. Actually उनका वर्क ही कुछ ऐसा होता है. उनका वर्क क्या होता है देखो. Their work is mostly dependent on absorption. So ऑब्जर्व करने के लिए इनका जो सरफेस एरिया होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए गाइस, और यही वर्क इन्वॉल्व करते हैं जब उनके पास माइक्रोबिल्ली अवेलेबल हो जाता है गाइस. एंड नेक्स्ट थिंग अबाउट देयर ऑक्यूरेंस. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देयर ऑक्यूरेंस. ऑक्यूरेंस काफी मैटर करता है क्योंकि ये जो कॉलमनार एपिथेलियम होते हैं इनका ऑक्यूरेंस ही काफी वैसे जगह पे होता है जहां पे कि ये अपना वर्क को परफॉर्म कर सकें. तो देखो कौन कौन से हैं, और बहुत ही मेन रोल से होता है कि ये अपने फंक्शन को, मेन जो ऑब्जर्प्शन होता है उससे ये लोग लोकेट कर पाते हैं. तो फर्स्ट वन हमारा स्टोमक. स्टोमक का जो इंटरनल लाइनिंग होता है वहां पे ये पाए जाते हैं. देखो एज वी ऑलरेडी नो समवॉट अबाउट द स्टोमक. स्टोमक इज ऑफ J-shaped organ is there and we can say that is what our term is stomach. And even one major thing is that देखो guys, ये जो हमारा स्टोमक होता है इससे बड़ा हमारा हमेशा ये याद रखना कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है गाइस वो काफी लंबा होता है ये सभी के कंपेयर में. तो आपको एक बात मैं बता देता हूँ, क्लास 10 में पढ़ना है, लेकिन इतना जानो कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारा इतना बड़ा होता है तो उसे हम लोग स्मॉल क्यों कहते हैं. तो छोड़ो, ये हमारा कंटेंट से बाहर है, लेकिन मैं बता दूंगा लास्ट में, देखूंगा अगर मेरे पास टाइम रहेगा गाइस. तो लेट्स सी अबाउट देयर. हम लोग बात कर रहे थे कहाँ पे ये ऑक्यूर रहता है. सो गाइस यहाँ पर से तो आपको क्लियर है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टोमक ये सभी में रहता है. इनका मेन वर्क होता है ऑब्जर्प्शन. अब ऑब्जर्व क्या करते हैं, देखो मैंने पहले ही बताया कि ऑब्जर्प्शन का बहुत ही बड़ा रोल होता है हमारे एपिथेलियम टिश्यू के थ्रू. तो ये ऑब्जर्प्शन क्या करते हैं, देखो ऑब्जर्व ये भी वही करते हैं. ये मत समझना कि ये कहेंगे कि फिर से बोल देगा कि बेस्ट मटेरियल को रिमूव करने वाले. तो दे आर अवेलेबल इन स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के लाइनिंग के ऊपर अवेलेबल होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी न्यूट्रिएंट्स आता है उसका भी ऑब्जर्व करने का काम कौन करता है, कोलमनार करता है. और एक चीज इनका जो मेन फंक्शन होता है वो सिक्रेशन होता है. देखो
ऑब्जर्प्शन तो मैंने बता दिया, ऑब्जर्प्शन कहाँ पे होता है, स्टोमक और इंटेस्टाइन में, ये स्टोमक के बाद इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व के पार्टिकल्स मूव करते हैं आगे वाले ऑर्गन में। लेकिन नेक्स्ट कंटेंट है हमारा सेक्रेशन। देखो मैंने सेक्रेशन में पहले बताया गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स दे प्रोड्यूस व्हाट, म्यूकस। Mucus is produced as a waste material by goblet cells, and mucus we can termed as another name, बोलो saliva चलेगा, लेकिन mucus और saliva में थोड़ा सा difference होता है, so leave it. And glandular is same as columnar because glandular later forms after getting aged by columnar epithelium tissue. Last thing we are going to discuss about ciliated. चलो ciliated कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आसान है। देखो there might be cilia as a outward projection, so they are termed as ciliated epithelium, but ciliated epithelium इतना भी आसान नहीं है जितना मैंने बोल दिया गाइस। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि ciliated epithelium का अपना कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और इनका जो फंक्शन होता है ये क्या होता है गाइस। तो वेट